Good morning students, Jai Swami Narayan. I hope you all are fine. So today's thought of the day, and today's thought of the day is that winning doesn't always mean being first. Winning means you are doing better than you have done before. Means the thing when you win any race or any of your life, maybe now you are a student, so what is important for you is education. So it doesn't mean that if you are getting first rank, second rank, third rank, so it will tell to you that you have done very much better things. It is not a correct way. Winning यानी उसका मतलब होता है कि अभी जो आप पढ़ रहे हो, अगर समझो सेकंड थर्ड आए हो या पीछे रैंक लाए हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, हर दिन ब दिन को उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बेटर बनाता जाना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो ही आप आगे मीन्स आपकी जो रेस होती है उसमें आप जीत पाओगे और लाइफ को इम्प्रूव कर पाओगे। ओके, एंड दैट इज इट इज फर्स्ट दैट विनिंग डजंट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट। Winning means you are doing better than you have done before। यानी अभी जो आप जीते हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने बहुत कुछ कर लिया होगा और इसकी वजह से आप जीत गए हो, पर विनिंग का मतलब होता है कि आप हर टाइम कुछ ना कुछ बेटर थिंग्स करते जाते हो, जो आपने पहले किए थे उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हो। ओके Okay students, after completing the question number 3, we are going to start the question number 4, and that is answer the following question. Okay students, now see the first one. Here now, who knew about the orange? What they are asking us, that who knew about the orange? कौन ऐसे लोग थे जो ऑरेंज के बारे में जानते थे पहले से ही? तो so the answer is the Greeks and Romans knew about the orange. Means those who live in Greek countries and those who live in Roman countries, they were knowing about the orange from very early years. Means वो बहुत पहले से वो उनसे के बारे में जानते थे। ओके, so who knew about the orange? The Greeks and Romans knew about the orange. Then name the 3 kinds of orange. Means they are asking us that we have to tell which 3 types of oranges are there. Okay, so the answer is the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. मीन्स फर्स्ट कैसे टाइप का है, जो स्वीट और कॉमन है, जो हर जगह पे आसानी से मिलता है। देन सेकंड इज द बेनेड्रिन। बेनेड्रिन ऑरेंज मीन्स a type of orange which are small in size and they are also they are having the sweet taste, so they are called as mandarin orange। and the third one is sour or bitter orange, means खट्टा और थोड़ा सा कड़वा, इस टाइप का भी ऑरेंज है। So there are 3 types of orange and they are the sweet or common orange, the mandarin orange, and the sour or bitter orange. Okay, then next, why is a kind of orange called blood orange? Means ऐसे oranges क्यों है जिनको blood orange कहा जाता है? A kind of orange is called blood orange because its pulp is deep red in color। ऑरेंज जो ऊपर से एकदम ठीक होता है, पर अंदर से जो होता है पल्प उसका, वो कौन से कलर का होता है? डीप रेड कलर का होता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लड ऑरेंज। अ काइंड ऑफ ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लड ऑरेंज बिकॉज इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर। ओके, नेक्स्ट, व्हाई इज द सार ऑरेंज यूज इन मार्मलेड? मार्मलेड यानी क्या? मार्मलेड यानी जो जैम बनता है ना, उसे कहते हैं मार्मलेड। सो द सार ऑरेंज इज यूज इन मार्मलेड बिकॉज इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। यानी ये जो खट्टे ऑरेंज है जिनका मार्मलेड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो इतने ज़्यादा कड़वे होते हैं कि उसे एक फ्रूट की तरह हम खा नहीं सकते।
इसमें जब वो मार्मलेड बनाते हैं तो उस फ्रूट्स में सब स्वीटनेस ऐड करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते जिसकी वजह से हम वो ऑरेंज को खा सकते हैं। एंड दैट इज व्हाई द मार्मलेड इज मेड बिकॉज इट इज टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। ओके, then why is orange a clean fruit? Why the orange is called the green fruit? Because the outer part है उसका वो कैसा है, थोड़ा सा थिक्की है, थोड़ा सा ऑयली है और एकदम कड़वा होता है। तो लोग क्या करते हैं, उसको ऊपर से ही छूते हैं और इस वजह से ना उसके अंदर ना कोई तरह की इंसेक्ट घुसते हैं, ना कोई गंदगी घुसती है और इस वजह से वो अंदर से जब हम उसके ऊपर से सारा जो उसके छिलके होते हैं वो निकाल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, एकदम क्लीन फ्रूट होता है। इसलिए द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट बिकॉज एनीवन हु टचेस इट only touches the outer covering, यानी उसको सिर्फ बाहर से ही लोग उसे छूते हैं और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा क्लीन फ्रूट होता है। ओके, सो वन मोर टाइम, नाउ सी who knew about the orange? The Greeks and Romans knew about the orange. Okay, then next, name the three kinds of orange. Which are the three kinds of orange? The sweet or common orange, the Mediterranean orange, and the sour or bitter orange. Okay, next, why is a kind of orange called blood orange? A kind of orange is called blood orange because its pulp is deep red in color. Okay, then next, why is the sour orange used in marmalade? The sour orange is used in marmalade because it is too bitter to be eaten as a fruit. Why is orange a clean fruit? The orange is a clean fruit because anyone who touches it only touches the outer covering. So students, today we have completed the whole questions of chapter 1. Okay, so you will write neatly and properly in your notebook and you will start the reading also of this. Okay, so take care and goodbye.